Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve problem number 18 of cash book from Intermediate First Year Accountancy. Now let us begin with our problem. Prepare triple column cash book. 1st April 2019. Cash in hand, cash at bank. So these both are our asset. और asset का हमेशा debit balance रहता है. First we will draw the format of cash book and we will move towards the debit side. ठीक है, 5600 and 10500 डेबिट साइड मूव हो गया. व्हाट इज द डेट? द डेट इज 1st April 2019. we'll adjust the date section a little bit, and here we need to write to balance B oblique D brought down. What is the balance of cash? 5600 and 10500. 5600 is the balance of cash and 10500 is the balance of bank. Now let us move towards our first transaction, that is cash deposited into bank 1500. 4th अप्रैल के दिन हुआ ये ट्रांजैक्शन. पैसे लिए आप, बैंक को गए डिपॉजिट कर डाले. So whenever there is a direct connection between cash box and bank, contra entry exists. Contra entry होते ही immediately will pass the journal entry. So what is the journal entry? The journal entry of cash deposit is bank account debtor to cash account. ठीक है. So ये journal entry में to cash के साथ है. So what we have to do? We have to write to cash here, and as per our journal entry we need to write by bank here on the payment side. So what is the date of this particular transaction? The date of this transaction is 4th April 2019, and in LF column for identification we need to write C. The date is 4th April 2019, and we'll adjust this a bit, and in the LF column for identification we have to write C. Now what is the rule of contra entry? We need to enter the amount in the opposite column. कैश दिखा तो बैंक में एंटर करो, बैंक दिखा तो कैश में एंटर करो. द अमाउंट इज 1500. सो इधर क्या है? कैश. कैश दिखा तो हमको अमाउंट किधर एंटर करना है? बैंक में 1500. इधर क्या है? बैंक. बैंक दिखा तो हमको अमाउंट किधर एंटर करना है? कैश में 1500. Now let us move towards the next transaction, that is on 6th April cash sales. 6th April 2019. Why we are writing this transaction on the debit side? Because आप गुड्स बेचे और आपके बिजनेस में पैसे आए, तो जब कभी भी बिजनेस में पैसे आएंगे वी नीड टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन ऑन द डेबिट साइड. ठीक है, रिसिप्ट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं. टू पैसे आने के पीछे रीजन क्या है? हम क्या करें? सेल करें, सेल्स अकाउंट, right? So what is the amount of cash sales? That is 2100. So 2100 will be the amount of cash sales, 2100. Then after that let us move towards the next transaction, that is on 10th. Commission paid through Paytm 1200. आप कमीशन पे करे, ये कब हुआ? 10th के दिन हुआ. तो पे करे बोले तो पैसे गए तो we have to record it on payment side for 10th April 2019. So in the payment side what we need to write? by, क्यों पे, क्या पे करें हम? कमीशन. by कमीशन अकाउंट. कैसा पे करें आप? पैसे दिए नहीं, वी हैव पेड थ्रू पेटीएम. पेटीएम के थ्रू जब आप पे करेंगे सो वी नीड टू एंटर द अमाउंट इन द बैंक कॉलम. कई को बैंक में से पैसे डिडक्ट होते हैं, पैसे किधर से जा रहे हैं? बैंक में से. इसलिए हम बैंक कॉलम में अमाउंट एंटर कर रहे हैं, दैट इज 1200. नाउ let us move towards the next transaction, that is on 13th April. Received cash from Rajesh 4600. Discount allowed. तो राजेश के पास से क्या रिसीव हुआ? कैश. So what is the date? The date is 13th. So पैसे आए हमारे पास, we'll write on the receipt side 13th April 2019, and here we need to write, ये पैसे दिए कौन? राजेश. account. What is the amount? The amount is 4600 is the amount. So discount is 400. The amount is 4600. Done. Now let us move towards our next transaction, that is on 15th April.
issued check to शेखर 2500, डिस्काउंट रिसीव 200। अब आप क्या करें, 15 अप्रैल के दिन आप चेक इशू करें तो हमारे बिजनेस में से पैसे जाते, पैसे गए तो हम पेमेंट साइड रिकॉर्ड करते। सो ऑन द पेमेंट साइड इन द डेट विल राइट द डेट दैट इज 15 एंड हियर विल राइट, आप चेक पे करें ना, किसको पे करें, आप चेक इशू किसको करें, शेखर, शेखर्स अकाउंट, डिस्काउंट कितना मिला 200 एंड आप चेक से पे करें ना, सो द अमाउंट विल बी डिडक्ट फ्रॉम द बैंक, सो इसीलिए हम बैंक अकाउंट में एंटर कर रहे हैं एंड दैट इज 2500। Now let us move towards the next transaction, that is on 18th April purchases 2600। अब परचेज करे तो बिजनेस में से पैसे जाते, पैसे गए तो हमको पेमेंट साइड रिकॉर्ड करना है, that is on 18th April 2019। So what we have done, we have purchases, so here we need to write by purchases account. What is the amount? The amount is rupees 2600 and we have to enter this in cash column 2600. Then after that on 23rd cash withdrawn from, this is bank, cash withdrawn from bank for office use 600। अब विड्रॉ करें तो कनेक्शन हो रहा कैश बॉक्स और बैंक का, तो कॉन्ट्रा एंट्री रहती, इमीडिएटली विल सी द जर्नल एंट्री, कैश विड्रॉन की एंट्री क्या आती, कैश अकाउंट डेटार टू बैंक अकाउंट। अब ये जर्नल एंट्री में टू बैंक के साथ है सो वी विल राइट टू बैंक हियर, बैंक and buy cash on the payment side as per our journal entry, buy cash account. What is the date of this transaction? The date of this transaction is 23rd and amount is 600. First we'll write the date 23rd April 2019 and we'll write C for identification in the LF column, 23rd April 2019 and we'll write C in the LF column. What is the amount? The amount is rupees 600। तो कॉन्ट्रा एंट्री का रूल क्या है, बैंक दिखा तो अमाउंट कैश में एंटर करो दैट इज 600 और कैश दिखा तो अमाउंट बैंक में एंटर करो दैट इज 600। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑन 25th अप्रैल सोल्ड फर्नीचर 3200। सोल्ड करे मतलब बेच दिए तो पैसे आते 25th अप्रैल 2019। क्या बेचे आप, फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज 3200, 3200 is the amount. Then the next transaction is on 30 April, check received from Vaibhav 7500, discount allowed 100, check deposited into bank। वैभव के पास से क्या हुआ, चेक रिसीव हुआ, कब, 30 के दिन, सो पैसे आए तो रिसिप्ट साइड लिखना है 30 अप्रैल 2019 एंड ये चेक दिए कौन हमारे, वैभव अकाउंट, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज 7500 एंड डिस्काउंट इज 100 इज द डिस्काउंट एंड वी नीड टू एंटर द अमाउंट इन द बैंक कॉलम, क्योंकि चेक आया ना और हम डिपॉजिट कर डाले बैंक में, so that is 7500। now everything is done, what we'll do the total of the discount column first, discount allowed is 500 and discount received is 200। now let us do the total of the debit side of cash column, कितना है 5600 plus 2100 plus 4600 plus 600 plus 3200, so the total is 16100। अब ये ज़्यादा है, जो ज़्यादा है हम क्रेडिट साइड पे लिख देते 16100 एंड फ्रॉम दिस 16100 वी नीड टू सबट्रैक्ट द क्रेडिट्स अमाउंट। अब कैश कॉलम में क्रेडिट साइड क्या दिख रहा है आपको, 1500 माइनस 2600, सो द बैलेंस विल बी, balance of cash will be 12,000। Similarly, we'll do the total of bank column debit side, that is 10,500 plus 1,500 plus 7,500,
सो द टोटल इज 19,500. ये ज़्यादा है, जो ज़्यादा है हम दोनों तरफ लिख देते हैं 19,500. एंड फ्रॉम दिस 19,500 वी नीड टू सबट्रैक्ट 1,200 माइनस 2,500 माइनस 600. तो क्रेडिट साइड के पूरे अमाउंट हम माइनस कर दिए. सो आंसर कितना है हमारे 15,200 इज 15,200 is the balance of bank. So we need to write here the last date, that is 30 April 2019. लास्ट ट्रांजैक्शन की डेट लिख देना है हमको. एंड इन द पेमेंट साइड विल राइट बाय बैलेंस कैरी डाउन C/D. एक बार बैलेंस कैरी डाउन लिखे तो इट इज मैंडेटरी टू ब्रॉट इट डाउन. इन्हें इधर से इधर आ जाता, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड आ जाता. द डेट विल चेंज and it will be 1st of May 2019. And here we need to write to balance brought down B/D. So what is the balance of cash? 12,000 is the balance of cash. And what is the balance of bank? 15,200. 15,200 is the balance of bank. From this we have completed 18th problem of cash book. In the next video, we'll cover the 19th problem, and that will be the last problem of cash book. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.